नमस्ते दोस्तों, दीपटेक चैनल में मैं आपको दिल से स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम 2023 के एग्जाम में पूछे गए एसएससी सीजीएल टायर 2 के एक क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पेपर साबित हो सकता है और ये क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ कंप्यूटर अवेयरनेस के एक पेपर है वह इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से एंड हियर इट इज। क्वेश्चन नंबर 1, N dash is an organization that connects its subscribers' computer using modem to the internet. Option A, Uniform Resource Locator. Option B, Web Browser. Option C, Web Server. Option D, Internet Service Provider. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और आईएसपी भी कहा जाता है। We can say an ISP is nothing but it's a company that gives people and businesses access to the internet. As an example, Jio, Bharti Airtel, BSNL, all are internet service providers because they provide internet services to their customers. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ISP. Now let's proceed to question number 2 and here it is. Which of the following is an example of GUI based user agent in email? Option A, ELM. Option B, Mail. Option C, Pine. Option D, Netscape. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, Netscape. Netscape, also named as Netscape Navigator, which was a discontinued proprietary web browser. Yes, it has been discontinued. It was a web browser and computer services company, which was once a leader in the browser market. Now let's proceed to question number 3 and here it is. In MS Office 365, the page setup dialog box can be found under which of the following tabs? Option A, Home. Option B, Draw. Option C, Layout. Option D, Insert. Now, the correct answer is option C, Layout, which is page layout. Okay. As you can see that page setup dialog box can be found in Layout or page layout tab. Now let's proceed to question number 4 and here it is. Number 4. When the sender and the receiver of an email are on the same system, we need only dash user agents. Option A, 2. Option B, 3. Option C, 4. Option D, 6. Here, correct answer is option A, 2. It's because if the sender and the receiver are on the same system, only the users are needed. Means the sender and the receiver. So, we need only 2 user agents. So, answer is option A, 2. Now, let's proceed to question number 5 and here it is. In File Explorer of Windows 11, which of the following tabs includes the hidden items option? Option A, Home. Option B, File. Option C, View. Option D, Share. Its correct answer is option C, View. The View tab in Windows 11 File Explorer includes the hidden items option. Now proceed to question number 6 and here it is. What is the primary purpose of RAM or random access memory in a computer? Option A, storing permanent data and files. Option B, providing long-term storage for programs. Option C, providing temporary storage for data that the CPU is currently processing. Option D, managing peripheral devices. Its correct answer is option C, providing temporary storage for data that the CPU is currently processing. So, we can say that the primary purpose of RAM, which is random access memory, in a computer is to store data temporarily for quick access by the CPU. Means, RAM is used to store information that needs to be used quickly. Now, let's proceed to question number 7 and here it is.
What is a cell in Microsoft Excel? Option A separate file used to store data. Option B, a single worksheet within a workbook. Option C, the intersection of row and column in a worksheet. Option D, a small diagram or chart. Here, each correct answer is option C, the intersection of row and column in a worksheet. In Microsoft Excel, the row, which is a number, and the column, which is a letter, which when intersect forms a cell. When we have B column and 5 row to form the cell B5. So its correct answer is option C, the intersection of row and column in a worksheet. Now let's proceed to question number 8, and here it is. Which networking device operates at layer 2 of the OSI model and forwards data based on MAC addresses? Option A, switch. Option B, hub. Option C, firewall. Option D, router. Its correct answer is option A, switch. Most network switches operates on the data link layer of layer 2 of the OSI model. OSI full form है Open System Interconnection. Now let's proceed to question number 9, and here it is. Which backup device provides a convenient way to create system images and complete backups but may require a lengthy restoration process? Option A, tape drive. Option B, network attached system NAS. Option C, solid state drive SSD. Option D, DVD writer disk. So, a tape drive is a device that stores computer data on magnetic tape, specifically for backup and archiving purposes. Now let's proceed to question number 10, and here it is. In MS Excel 2019, what does the sum function do? Option A, it multiplies the values in a range. Option B, it adds up the values in a range. Option C, it counts the number of cells in a range. Option D, it finds the average of values in a range. Since the question is related to sum function, sum means to add. If there is any option with add, here option B is such option. So the correct answer is option B, it adds up the value in a range. Now let's proceed to question number 11, and here it is. Which of the following is not an example of web browser? Option A, Facebook. Option B, Apple Safari. Option C, Google Chrome. Option D, Opera. वेब ब्राउजर वो है जिससे हम वेब पेज ब्राउज कर सकते हैं. So we can also say web browser is a program that allows users to access and interact with the World Wide Web. तो आप लोग देखिए यहाँ वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है. क्या फेसबुक वेब ब्राउजर है? ये तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक. नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 12, एंड हियर इट इज. क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत होता है. कृपया आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. What is the function of the cache memory in a computer's memory hierarchy? Option A, to provide permanent storage for data and files. Option B, to store faster used data for faster access by the CPU. Option C, to control the flow of data between the CPU and the memory. Option D, to manage the allocation of memory resources to the different programs. Here, correct answer is option B, to store faster used data for faster access by the CPU. देखिए ये क्वेश्चन आगे मैंने बहुत बार कवर किया है. ये SSC CGL टायर 2 में आया है. कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी कंप्यूटर के फास्टेस्ट मेमोरी है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा है उसे स्टोर करता है. क्यों? टू इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस. आई होप कैश मेमोरी इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13, एंड हियर इट इज. What is the keyboard shortcut for copy in most Windows applications? Option A, Ctrl plus Z. Option B, Ctrl plus C. Option C, Ctrl plus X. Option D, Ctrl plus V. As we all know, Ctrl plus C is a shortcut key for copy in most of the Windows applications.
Say for example, in MS Word, Excel, etc., the shortcut key for copy is Ctrl+C. So its correct answer is option B, Ctrl+C. Now let's move to question number 14, and here it is. What is a firewall in the context of network security? Option A software application for managing files and folders. Option B, a type of malware that spreads through email attachments. Option C, a security mechanism that filters and controls network traffic. Option D, a hardware device used to boost network performance. तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम है जो नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। क्यों? टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है। फायरवॉल ट्रस्टेड नेटवर्क को अनट्रस्टेड नेटवर्क से सेपरेट करने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल करता है, जैसे कि इंटरनेट। Now let's proceed to question number 15, and here it is. A high-speed memory is placed between the CPU and the primary memory, known as dash memory. Option A, read-only. Option B, virtual. Option C, cache. Option D, secondary. ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन 2 बार आया है कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में प्लेस करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैश मेमोरी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 16, एंड हियर इट इज। क्वेश्चन नंबर 16, इन कंप्यूटर रजिस्टर्स MAR stands for option A, main access registers. Option B, memory access registers. Option C, memory address registers. Option D, main address registers. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स। MAR जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कंप्यूटर सीपीयू का एक पार्ट है जो मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करता है डाटा स्टोरेज और रिट्रीवल के लिए। इसे एड्रेस बफर भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स, व्हिच इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17। नाउ हियर वी गो। क्वेश्चन नंबर 17, what is a Trojan in the context of network security? Option A protocol used for secure communication between devices on a network. Option B, a program that monitors network traffic for security breaches. Option C, a type of firewall that protects against viruses and malware. Option D, malicious software disguised as legitimate software to gain unauthorized access. तो Trojan is a malicious software and it appears to be a legitimate software and it tries to get unauthorized access to the system. So its correct answer is option D, malicious software disguised as legitimate software to gain unauthorized access. Now let's move to question number 18, and here it is. Question number 18, in MS Word, what is the purpose of the print preview feature? Option A, to insert images and graphics into the document. Option B, to format the font and style of the document. Option C, to check the spelling and grammar of the document. Option D, to view how the document will appear when printed. So, as the option D depicts, print preview is to view how the document will appear when printed. मतलब हमारा डॉक्यूमेंट किस तरह प्रिंट होगा, कैसा होगा, वो प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 19, एंड हियर इट इज। क्वेश्चन नंबर 19, इन फाइल एक्सप्लोरर ऑफ विंडोज 10 द कीबोर्ड शॉर्टकट नामलॉक प्लस ** is used to. Option A, display all subfolders under the selected folder. Option B, open the properties dialog box for the selected item. Option C, display the contents of the selected folder. Option D, collapse the selected folder. So its correct answer is option A, display all subfolders under the selected folder. Now let's proceed to question number 20, and here it is.
Question number 20. Which of the following is an example of input device in a computer? Option A, monitor. Option B, touchscreen. Option C, printer. Option D, speaker. As we can see that a monitor is an output device which displays the results. Printer is also an output device which displays the result in a hard copy. Speaker is also an output device which produces sound as output. But a touchscreen is an input device with the help of which we can input data. As for example, smartphone, ATM, etc. So, its correct answer is option B, touchscreen. तो क्वेश्चन क्या था? Which of the following is an example of input device in a computer? Its correct answer is option B, touchscreen. दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा नहीं, या आप अपना मेरे लिए गुरु दक्षिणा समझ के कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे कुछ 20 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल टीयर 2 को, जो कि 26/10/2023 को आया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कोई भी एग्जाम के लिए। अगर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके रिलेटेड टॉपिक्स आप चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डीप टेक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।